I was born and raised in New Delhi, India, a country of 1.2 billion people. For the longest time, I didn't know what made it new. Not a lot of people do. Just like a lot of people don't know what makes New York or New Jersey new. We just accept it. It feels good to live in a new city. For New York and New Jersey, their namesakes, York and Jersey, lie far away across the Atlantic. But in a place like Delhi, the past is never far away. Right in its heart is the beauty, the history, and the echo of a bygone era. The city of Old Delhi. Walking these streets, surrounded by the teeming multitudes, it is easy to get lost. It is easier to feel absolutely alone. But if you ever stray off the beaten track, if you ever forget the way, there are those who will find you. They are the ones who know every street, every alley, the congested veins and arteries of this bustling metropolis. In the blistering heat of summer, the torrential monsoons, the biting chill of winter, dawn or dusk, bright day or dark night, you will always find a rickshaw man to take you home. The people of this great city trust them with their life, their property, even their children. And yet, they are despised by a society that defines progress as the shift from a rickshaw to a motorized vehicle. All my life, I've been on thousands of rickshaw rides, but I never asked the name of a single rickshaw man, who he was, where he came from. I never asked them anything. I will confess I hardly gave them a moment's thought until I came to the United States. This great land of plenty and prosperity with just over 315 million people and over 254 million cars and trucks. Therefore, what I least expected to find in the streets of New York, Austin, Dallas, and many other cities was the pedicab. A new name for the old familiar rickshaw. Two cities, two countries, on two continents, I met two rickshaw men. And this time, I asked their names. मेरा नाम चांद है। मेरी उम्र 26 वर्ष है। जी मैं यूपी से डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद से आया हुआ हूँ। मुझे 8 वर्ष हो गए दिल्ली आए हुए रिक्शा चलाते हुए। मैंने 9th क्लास कर लिया। मैंने पढ़ाई अपने परिवार की समस्या को देख कर पढ़ाई छोड़ी। हमारे गरीबी हालात थे, इसी वजह से हमने पढ़ाई छोड़ी। यूपी में अब 100-200 रुपये से ज़्यादा का काम नहीं कर सकते थे। यहाँ 400-300 का काम हो जाता है। इस वजह से हमें दिल्ली आना पड़ा। यहाँ पे जो लड़का लेकर आया था मुझे, वो यहाँ पे गाड़ी चलाता था। उसने मुझे गाड़ी दिलवाई रिक्शा।
उसने रिक्शा पहले सिखाया, रिक्शा सिखाने के बाद में बोला जाओ चलाओ। तो मैं यहाँ से जब गया तो मैं कनाट प्लेस पहुँच गया था। तीसरे दिन लौट के आया था यहाँ ठीक। रास्ता भूल जाता था तो उसे पूछता था, कोई इधर का बता दे करता था, कोई इधर को बता दे करता था। जहाँ रात हुई थक गया वहीं सो गया रिक्शा पे। चेन ताला मेरे पास में था, पहिए में ताला मारा और इसी पे सो गया। ये सारे ही पोलर यहीं पे सोते हैं जितने रिक्शा चला रहे हैं। अब ये हमें 8 दिन में भी जाना पड़ जाए इमरजेंसी हो तो कमरे किराए यहाँ पे 3,000-4,000 रुपये से नीचे का कमरा नहीं है। और हम 15 दिन में 3 या 4,000 रुपये कमाएंगे तो फिर घर क्या लेके जाएंगे। इसीलिए पार्क में सोना पड़ता है। ये ज़मीन पे चादर बिछा के लिहाफ ओढ़ लेते हैं। ठंड लगती है, वहाँ बर्दाश्त करना पड़ती है। Works for me. I don't even have a tip. A smile, and then a smile, and then a smile, and then a smile. I have no cash. There we go. I like smiles, hugs, kisses, I've tips. never You know? ever ridden out. I mean, See, I it's ride- all about the experience. It Why are you is. embarrassed? I don't This know. is the way to travel now. I don't even know what a car is. My name's Mike Harper, and 31 years old, and been driving a pedicab here in Dallas for about 2 years now. I got involved with trying to start up a pedicab company here in Dallas and do something active, and it didn't work out, and then had an opportunity to come and work for another company. And so it's an opportunity for me to go out, have fun. I like to talk to people and exercise, and every once in a while I end up making a few tips while I exercise at the same time. So it's kind of a dream job for me. I actually have a blast. It's my escape, and it's exciting. Because we always do free rides. I do tips if you have a really good time, but this is my dream job. There we go. She's got tickets for you. Watch your step. We'll snuggle on the way there and have fun, right? It's kind of interesting to mention about fitness because my dad actually passed away from having a heart attack. And so I actually am a big advocate of fitness, and kind of my family, we've even had a change of how active we are. I find that when I go out and I'm riding the pedicab, I'm really just exercising. I'm having fun. I'm fooling around. I'm trying to fool around and sell you on a good time. And for me, I don't feel that that's work. There's not a lot of pressure on the pedicab. If I have a night that it's slow on the pedicab and I don't have sales per se of a lot of rides, well, it doesn't make a big difference for me. So this is my real job, and at my real job, I'm actually a teacher. I work at a nonprofit, and our mission is education, preventative medicine, and really our focus is on exercise as preventative medicine. I was the kid that if you lived on my street, I was knocking on your door. I was trying to sell you something. It didn't matter what it was. I was the kid that had the lemonade stand that didn't quite think through it far enough that you had to sit there and drink your lemonade with me because I needed that cup back. I didn't think through all of those things, but I was always trying to sell things, and so and convey and talk with individuals, and so that worked really well for me in that. What's up, ladies? How are y'all? Where are you headed tonight? You having fun tonight, though? I'm coming. Stay right there. Don't leave the curb. Wait for it. No intersection. I'm coming.
Most rickshaw men in India are migrants from villages in neighboring states. They were farmers, artisans, or small business owners back home, and when it became impossible for them to survive, they were forced to migrate to the streets of Delhi, where the only employment opportunities available to them are street hawking, construction labor, or the rickshaw. Having no ties or connections in the city, they have no rights or legal protection, and they live a life of routine harassment at the hands of society and the system. ये दिल्ली शहर जो इसमें भीड़ भड़क कई ज़्यादा, मैं रहते रहते यहाँ सब यार दोस्त हैं, जानने वाले, अच्छाई बुराई यहाँ की पहचान गए। यही है कि गरीब आदमी का यहाँ कोई ठिकाना नहीं है। कोई रिक्शा वाला यहाँ खड़ा, कोई भी आगे थप्पड़ मार देगा। पुलिस वाले से भी शिकायत करो तो वो भी यही बोलता है कि आगे बढ़ा, यहाँ खड़ा है। चाहे उनका अगर किसी काम से भी खड़ा हो गया, सेट में आगे कोई थप्पड़ भी मार देगा तो आगे बढ़ा है। रिक्शा वाला चोर, मतलब बोल नहीं सकता रिक्शा वाला, किससे क्या कहेगा, परदेसी है। थोड़ा इंटर हाई स्कूल होता तो तमन्ना थी कि आर्मी में या सीआरएफ में कहीं भी मैं भर्ती निकलेगी तो मैं उसमें अपनी कोशिश करूँ। आर्मी का शौक बहुत बचपन से था और अभी भी मेरी तमन्ना ये है कि कोई ऐसा मकाम आए, मैं कहीं फार्म डालूँ इंटर के, हाई स्कूल करके इंटर के, ताकि मैं कहीं मुझे चांस मिले। भाई तू रिक्शा चलाता है? मजाक से लाओ, मैं मान नहीं सकता ना, क्योंकि एक तो इसकी ड्रेसिंग, इसके हाथ पैर चलो सलामत है, कहीं जाएगा जॉब के लिए या कहीं नौकरी के लिए जाएगा तो कोई मना नहीं कर सकता है। और एक रिक्शा वाला जो है उसकी कंडीशन अलग ही दिख जाती है। एक कंडीशन जो होती है इंसान की रेडी होती है, मतलब किसी का हाथ नहीं है, गरीब है, घर से कपड़े वपड़े ढंग के नहीं पहना हुआ, इस चीज़ के वो है। तुम्हारा नाम? मोहम्मद सैफ। मेरी खुद वर्कशॉप है, मोटर पार्ट। इंसान मेहनत करता है तो दिखता है आज ये मेहनत कर रहा है, अगला इसकी ये सफल हो सकता है। रिक्शा चलाने वाला कभी सफल नहीं होगा, 1000, 2000, 5000 कमा लेता है, मगर एक रिक्शा वाला दिन भर में 100 रुपये कमाएगा ना, 30 रुपये रिक्शा के किराए को निकाल देगा, 70 रुपये का एक क्वार्टर खरीदेगा, 20 रुपये की रोटी खाएगा, मस्त होकर सोएगा। अपने घर वालों के पास रहेगा, प्यार मिलेगा। यहाँ रिक्शा चलाएगा तो लाते मिलेंगी, रिक्शा वाले के तमाचा मार देता है कोई, जो साइकिल पे जा रहा होगा उसको तमाचा मारने से भी डरता है। इसकी साइकिल अपनी है, इसका रिक्शा किराया का है। कहने का मतलब है रिक्शा वाले को कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, वैल्यू बना। यही बात तो ये पूछ रहे हैं, तो मैं भी तो रिक्शा वाले की कोई वैल्यू नहीं है तो पूछ रहे हैं। फिल्म लो। हाँ ये लो, हेलो नाटक दारू पीता आराम से ले जा। तो फेल दूंगा मैं। आओ जनाब। अब देख रहे हो शराबी तुम्हारे सामने कितना परेशान कर रहा है। आलू की सब्जी जिंदगी बुरी लगती है, हकीकत में इतना परेशान करते हैं, रात को सोने नहीं देते हैं। और दिन वो बेच के रहा, सब शराब पीते हैं, सब नहीं पीते हैं। अब 10 बंदे हैं परेशान सोने से, 3 बंदे पिए बैठे हैं, सबको परेशान कर रहे हैं। रात में देख रहा हूँ, मैंने आपको बताया था एक पी लेता नाटक करता, वही नाटक होता, यही नाटक अभी वो आया था शराबी मैंने जो से भगाया, यही नाटक है रोज का। अभी कोई पुलिस वाला आ जाओ, सब पे डंडा फेर देगा, 100 पे भी। चलो नाटक कर रहे हो, जुआ खेल रहा हो, खेलेगा एक पीटेंगे सब। भाई पानी दे दो, एक रोटी रुमाल है।
थोड़ा बचपन से माहौल जो ख़ानदान का थोड़ा वैसे ही रहा। अब आके हम जो यहाँ फंस गए, जब सोचा नहीं था जिस चीज़ का, उसमें पड़े हैं। फिर गाली दे, बदतमीज़ी करे। अब इन भाई साहब के सामने एक ने हमें जलील बनाया पार्क में, बहुत ज़्यादा। सुनी मैं, चलो भाई तू केजा, तेरा टेम है, तू मैच खेलना आया, दिल्ली का वासी है, 7,000 महीने के कमा रिया, तू भाषण फेंक रिया है। फेंक जा भाई, क्या करूं। मेरा भी यहाँ घर बार होता, चाहे मैं रिक्शा चला जाता, मेरे भी 2-4 दोस्त होते, हो सकता मैं भी तेरा साथ कुछ करता। सुनने हूँ तेरी, अगर गलत भी है तो सुनना पड़ रही है। This is our second gardening season, so trying to learn how to garden a little bit. So we had some lettuce that made it through the winter, and has like a sharp flavor, but it's good. So then planted some other stuff just recently. There's some other varieties of lettuce right here that are starting to come through, and then right here I've got baby carrots coming, hopefully, cross my fingers. Last year we had okra, and it took off, and I had so much okra I didn't know how to cook okra. All I knew about was fried okra. To see the whole garden and the compost, just how it has its own life, and even as much as sometimes we try to control it, it still, I would say, has its own time for things. I think sometimes I get frustrated with the compost and hoping that it would hurry up because I want to speed up the process. But some things you can't speed up. And patience with the garden, I think that's one of the things that it's kind of nice for me, because I know that I have to be patient with the garden because it's on its own time frame. I can add as much fertilizer and nutrients, but it's still one of those things that you can't control. And I think that's something that sometimes can be difficult to realize, the things you can and you can't control. ये फसल का ये तो उगेगी, भाव अगर के मंडी भाव के आने के बाद हैं, भाव सही जैसा है आ तो जाओ। 30,000 की भी हो सके हैं, 20,000 की भी हो सके हैं, और भाव नहीं आया तो सब्जी का भाव खाई भी जा सकता है। अभी इसका क्या भरोसा, भाव आए नहीं आए, फल आए नहीं आए। अभी पिछले साल इसी खेत में हमने खीरा लगाया था, तो एक बार लगाया हमने 18,000 रुपये का बीज, वो मारा गया, मतलब बारिश हुई तो वो गल गया। तो फिर दोबारा लगाया तो वो इतना लेट हुआ कि कुछ माल भी कमाया लेट में, और फिर भाव भी नहीं मिला। 2 रुपए तो 30-35 हज़ार रुपये लगा के 35 रुपये का खीरा बेचा नहीं था। और कहाँ की कमाई लगाई थी? और सारी दिल्ली की वो तुमने देखी है कमाई, रिक्शा की। रक्षा चला चला के खेती में लगाया, मारा गया। मेहनत तो जो है दोनों ही कामों में है बराबर। रक्षा में तो और ज़्यादा लग रही है, रक्षा इसमें तो ऐसा मजबूरी है। में चलाते हैं। मजबूरी। रक्षा जो है, रक्षा तो रक्षा ही है। सही हो रहे हैं बड़े पापा? हाँ, बढ़िया हो रहा है। मजबूरी है रक्षा तो।
घोड़ों गधों का काम है, मगर ये पेट है, इसे भरना है दोस्त। हाँ, तो टाइम हंस के गुजारा जाता है। ये तो कह रहे हो, हमें मेहनत से कोई इतराज़ नहीं। हाँ, अब यहाँ मजदूरी में क्या गुजारा कर सकता आदमी। 100 रुपए की दिहाड़ी में गांव में क्या कर लेगा। हाँ पता है मुझे, हाँ फुटवेयरी पे रहता, दिल फटने का वो होता कि एक बच्चा वो भी फुटवेयरी पे टाइम काट गया। हाँ, 1000-2000 लिया था तो अपने आटा ले लिया, कुछ चावल ले लिए, कुछ सौदा लिया, कुछ अपने खेती में लगा दिया। बाल्टी में मेरा बेटा कितनी जल्दी आओ, जल्दी से, ये सवेरा दिन में झगड़ा करते साला। मेरा बेटा जल्दी ले आइयो। अबे आ यहाँ को पूरी खा ले। आ यहाँ को अबे ले ले ऊपर से ले ले। अरे नहीं खा रही हम। क्या मूवी बनवा के गए नानी भाई भी ले मेरा पड़ा था। कविता सुनाओ। बनवाए गया दिल्ली में ले लिया I think you have to find out who you are and be happy with who you are. And it was interesting because, especially for me, I found that that was something I dealt with in coming out with who I am and with my family. That, you know, your traditional society looks at you as someone that maybe should be dating a female, that you should maybe marry a woman, and that's just kind of what's expected maybe. And so I found myself that going through high school and college that I dated girls and we had fun and we were good friends. And a lot of those folks, I would say that we were just really great friends and we got along really good. But nothing really just took off, nothing ignited anything. My dad didn't know that I was gay, and I think he would have been okay with it. I think he would have loved me either way and been happy, because I was happy. I never know. It just happened that timing didn't work that way for me of when I found out who I was and had that strength to go through that. It was interesting because, you know, there were things that you heard that, you know, people didn't mean to say, but they were actually pretty okay with things. I think I surprised them a little bit, but then some of my friends I would tell, they're like, okay, yeah, we've known that. So, you know, and there are some people that I've had friends that they haven't been as receptive, but that's okay because I have other friends. And so maybe they've somewhat dropped off the radar, and that's great because I knew that I was moving forward, and so you're either with me or you're without, or you're not with me. I saw them at a bar across the way, and we ended up running into each other and talking for a quick second, and that was about it. From there, it took off, and it was great because, I don't know, just, you know, everything was perfect. He gets me, has a positive outlook, and lots of energy and ideas, and I would say that he thinks outside the box as well, and puts his heart into it too, and he's got a lot of heart too, I would say. प्यार हुआ नहीं था, है अभी तक, अभी भी है। इसमें झूठ बोलने की क्या बात है। वो पढ़ती है, इस टाइम पे उसका BA फाइनल है अब के साल में।
उसी लड़के, अभी भी उसी से बस बात कर रहा था जो इन्होंने खाना वाना फेंका, उसी से बात कर रहा था भाई। उसको तुमने बताया? जी नहीं, उसे जो इतना मालूम है कि फ़ोनरों पे रिक्शा चलाते हैं, उसी से मैंने एक जो सच्चाई नहीं छुपाई थी, क्यों आने वाले कल उसे पता चले उसकी तौहीन हो, कोई बात नहीं। जब मैं पढ़ाई छोड़ के आया था तब मैं पहले रिक्शा चलाना था, मैंने तब बताया था उससे, बोलिए आप कहाँ गए थे इतने दिनों वहाँ, मैंने कहा ऐसे मैं रिक्शा चला रही हूँ। तब मेरा यकीन नहीं करा उसने, फिर दोबारा मैंने फ़ोटो जाके यहाँ अपने मोबाइल में खींचे, जब रिक्शा के दिखाए तब उसे विश्वास आया। मैं देख, कोई भी अगर मैं तुझसे सच्ची मोहब्बत कर रही हूँ तो उसमें कोई भी वो बात नहीं होना चाहिए। इससे तू कल के होता आज हट जाइए। जब मेरे साथ ऊपर वाले ने सारी चीज़ें छीन ली, तू भी हट। फिर भी उसने लगाव रखा, बोली जो भी होगा अब देखो। वो मेरी सच्चाई से लगाव करती है, मोहब्बत। It's too hard to live who you aren't. For me, it was tough too because you deal with what are other people going to think. I don't like to say that I'm one that I worry about what others think because I can't control what others think. I don't care if you like me or not. Sorry, I am who I am. I'm going to try my best to, make myself enjoyable for you. I think it'll be interesting to see the future and see the future for our society as well, of changed minds in a lot of different ways of how we deal with things. यहाँ तुम गाली दे लोगे, मतलब मेरी मुझे यहाँ से आपसे कोई मतलब नहीं है ना। मुझे जो अपने इलाके में जाकर अपने रिश्तेदारों से और अपने परिवार से मतलब है। मुझे अपनी सोसाइटी, अपने घर की और अपने परिवार की देखना। मेहनत करूँगा, ऊपर वाला आज मेरा वक्त पहले अच्छा वक्त था, आज बिगाड़ दिया, कल आने वाले कल में फिर मेरा वक्त सही आएगा अगर मैं ऐसी मेहनत करूँगा तो। मुझे भरोसा उस पर खुदा पे, जिसने वक्त मेरा अच्छा लाया था, पढ़ाई लिखाई कराई थी, उसके बाद में रिक्शा पे आया। फिर भी मुझे उम्मीद है मेरे अच्छे दिन आएंगे। और मैं रोज़ डेली सोचता हूँ, मैं हकीकत में यही, मैं स्कूल के बच्चे लेके जाता हूँ स्कूल को, तब मैं हकीकत में सोचता जाता हूँ क्या मेरा हुलियार मैं बच्चों को लेके जा रही हूँ। कभी मैं ऐसे पढ़ने जाता था। अब मेरा दिन वो पढ़ाई लिखाई का तो नहीं आगा, मगर कारोबार का आगा। मेहनत करूँगा तो। It's easy to see the difference between the East and the West, India and America, Delhi and Dallas. And frankly, some small part of me, when I set out to make this film, wanted it to be about that. But now I see that even though Mike and Muhammad are separated by geography, economy, culture, and society, they are not so different from each other at all. There are no sweeping general statements in the end, just that I journeyed across the world, and this is what I saw from the back of a rickshaw.